सही यार करते हैं सीन ऑन है. So, welcome to the Karshan Affairs Show. This is season 2, episode 10. This is probably the last episode of this season because we honestly like, 10 episode seasons. जो 2025 वहाँ तक चलते हुए टीवी शोज़ हमें भी अच्छे नहीं लगते कि वाकई में मुझे लगता है कि हम वो छोटे बच्चे जिसको 10 के बाद गिनने की जहनियत नहीं है. But like we often get lost at 13 and 14, so we'll probably do a new season the next time. तो आज की यार जो भी बात हुए थे काफ़ी इंटरेस्टिंग था कि हमने सोशल मीडिया से शुरू की, यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया तक आ गई और काफ़ी यहाँ वहाँ से गुज़रे. लॉ था, हमारे मसले थे, मगर नॉर्मली जो होता है वो माहौल से काफ़ी अलग था कि हमारे काफ़ी पर्सनालिटीज़ तो है भाई कि हम सब तरीके से फिट होते हैं बंदे. कि आप जहनियत की बात करें तो हम तो वहाँ है, सियासत की बात की तो हम वहाँ है, शेर और शायरी हम वहाँ है, स्पोर्ट्स है वहाँ, कुछ भी हम यार इंसान ही नहीं लगते. अब जो भी मतलब जिस तरीके से जनरलाइज्ड इंसान मतलब एआई वर्जन होते जा रहे कि हम कुछ भी वी आर लाइक an AI rendition of the guy you meet on a plane, we are man, I don't want to say this, we are the Tyler Durden you meet sat next to you on the plane. Exactly. The image I had in my head even before you said it, I swear to God, man. Oh man, मगर यार आजकल जितने हम फाइट क्लब को आयरॉनिक समझने लगते हैं, आजकल यार ज़्यादा से ज़्यादा हकीकत होते जा रहा है कि मैं भी जैसे मैंने कहा कि पिछले हफ्ते काफ़ी बुरे थे, तो one of the quotes I had going on in my head is it's only after we've lost everything that we're free to do anything. मगर I don't know where to start this one, where to end this one. तो सीज़न 2 में हमने क्या की थी कि हमने शुरू की जो हमारे पिछले बार यार काफ़ी अच्छे बात तो हुए थे, हम काफ़ी गहरी बात भी की है, मगर एक फजूल की बात आपसे पूछता हूँ कि मैं तो कल घर पर फारिग बैठा था तो मैं ताबिश आसमी की टू बी ऑनेस्ट की इंटरव्यूज़ देख रहा था. तो ताबिश आसमी यार वैसे काफ़ी टैलेंटेड इंसान है. मुझे पहले लगा लाइक व्हेन आई फर्स्ट केम अक्रॉस हिम, मैंने सोचा ये तो यार पाकिस्तान की कपिल शर्मा है. And I personally don't find Kapil Sharma funny, right? मुझे slapstick humor अच्छा नहीं लगता. I can't stand that guy. He kind of sucks. Exactly. But Tabish Ashmi is like an accomplished person. He's got a very high paying job in Canada. मगर वो लौट आए कि वो कॉमेडी में काम करना तो चाहते थे. तो वैसे अहमद अली भट्ट की पॉडकास्ट में ही देखा बंदा को. After that I went into, to be honest, rabbit hole, but उसकी पहले एपिसोड में तो था आयशा उमर, और एक ज़माने में हमारे क्रश होता था आयशा उमर, और आज तक आयशा उमर ने शादी नहीं की, यूँ घूम रहा. मगर पता नहीं, मुझे ये तो समझ आई कि, और यार मुझे पता नहीं आपने ये शो देखा भी है कि नहीं, मगर एक काफ़ी कंट्रोवर्शियल एपिसोड था उसकी जिसमें मथीरा आया था. और मथीरा वैसे एक लड़की है जो पाकिस्तान में काफ़ी फेमस है, मगर काफ़ी हाँ तो आप जानते हैं. तो मगर वो यार मैं इस तरीके की लड़कियों से या लड़कों से मैं उनके ख़िलाफ़ नहीं हूँ. मैं डिफेंड करता हूँ कि आपकी फ्रीडम ऑफ स्पीच तो होता है एंड यू डोंट हैव टू कन्फर्म बाय एनीथिंग. मगर मुझे लगता है कि जो पाकिस्तानी मतलब तमीज़ है, तहज़ीब है,
उसके हिसाब से वो रिप्रेजेंट तो नहीं करते कि एक तो बंदी जिम्बाब्वे में काफ़ी वक्त गुजरे है मगर आई डोंट थिंक शी इज़ द representation of a Pakistani woman that we think of and she's not the representation of the Pakistani woman that we fell in love with, right? तो मैं उसके ख़िलाफ़ कुछ नहीं कहना चाहता मगर सिर्फ एक बात तो उसने कहा था वो मैं आपसे कहूँगा और वहाँ से शुरू करते कि ताबिश ने उनसे कहा था कि ज़रा आप मेरे साथ खड़े हो जाइए सही कि दोनों बैठा था और उसने कहा यार अगर मैं खड़े हो जाते तो सारे खड़े हो जाते तो पता नहीं यार बड़ी फजूल बात है मगर लेट्स सी वेयर दिस गोस हाँ यार या मुझे अभी भी याद है क्योंकि काफी मैं वो क्लिप्स देखता था I've never watched her show मथीरा का अपना शो आता था लाइव शो होता था you know हाँ मैंने नहीं देखा मैं पहली बार इसकी शो में देखा हाँ मैंने यार पर उसके मैंने काफी क्लिप्स देखे थे क्योंकि YouTube क्लिप्स आते थे काफी जो ना उसके शो में से क्योंकि अक्सर जो लोग फोन करके थे they would be like very like thirsty dudes you know जो उसके शो पे कॉल करते थे हाँ यार तो जो काफी भूखे प्यासे होते थे you know and so they would say just like the most like turkey shit you know towards her and तो हाँ ये तो यार मुझे याद है you know I would see a lot of those clips पर उसके अलावा यार I never watched her show but I've seen her on I think एक तो शहजाद के शो पे आ चुकी है एक दफा she was on the Pakistan Experience and एक दफा I think she was on Muru's podcast as well हाँ मुरू की पॉडकास्ट में भी शायद है मुझे भी थोड़ा याद है मगर यार क्या बताता है कि यार जो ये मैं अभी जो पॉडकास्ट देखता हूँ ना मुझे लगता है कि there are a few things that I'm trying to learn from most of them मगर यार सबकी नॉर्मली क्या होता है कि एक इंटरव्यू फॉर्मेट होता है कि you know I don't know if you've seen the Ricky Gervais show but that yeah so it's a podcast that like it was probably the first podcast I saw कि वो मैं एक पुराने ज़माने में देखता था या सुनता था सही उसकी वैसे YouTube में एनिमेटेड वीडियोस भी होता था तो वो देखता भी था and I've always felt like that was a very good podcast to me. It's one of my favorite shows ever, right? Because it's funny and but it's always got three guests, right? Ricky Gervais, Stephen Merchant and Carl Pilkington. And it's a wonderful show because it needs nothing. It's just founded on stupidity. मगर आजकल की पॉडकास्ट नॉर्मली यार ये जो टीवी शो वाले इंटरव्यू है कि लाइक द टुनाइट शो ऐसे पॉडकास्ट चलता है एंड द प्रॉब्लम विथ पॉडकास्ट लाइक दैट इन माय ओपिनियन इज दैट दे डोंट हैव अ सेंस ऑफ कंटिन्यूटी यू नो लाइक एक एपिसोड अगर आप ताबिश हाशमी के साथ कर रहे हो और दूसरे मथीरा के दीज आर टू सेपरेट ऑडियंसेस यू नो कि पॉडकास्ट की कोई मतलब डेफिनेशन नहीं है कि द ऑडियंस इज supposed to be somebody who likes this कि host तो host है भाई वो तो सिर्फ सवाल पूछने आता है तो why would you I don't understand why it's always this way or podcasts are going that way around मुझे हमेशा लगता है a set like if on this podcast right if our friends ask to join and let's say we accept it right we would still just make fun of them and not ask them anything कि हमारे ये माहौल है अगर आप इसकी हिस्सा बनना चाहते हो तो बन लो but we are not going to change for you कि यहाँ की ये फॉर्मेट है भाई हम फजूल की बातें करने आते हैं तुम्हारे कोई सुनने नहीं सही so I don't know what your take is on this but I've always been annoyed by shows that change every episode. No, it's a good point, man. Even when it's someone like Muru or Shahzad, you know, who interview like a wide variety of guests, like everyone from like Taimur Rahman to Mathira, you know, they've interviewed everything in between those two as well, you know. So it often, I think what often happens is like I won't even click on some episodes because I know yaar ye mere interest ka nahi hai. And I'll watch the ones where I find the guest interesting.
But I think what often happens is like, since the host picks his guests, right? Yeah. So if like the host is like someone who you share like interests with, or like if you share the same worldview as the host, chances are that they're gonna bring on people that you find interesting, I agree because अहमद अली भट्ट का जो शो है उसमें तो गेस्ट अली ज़फ़र फवाद अफसर ख़ान की जो बंदे म्यूज़िक से रिलेटेड हो ऐसे बंदे और आर्टिस्ट होते हैं तो ये तो मैं मानता हूँ कि होस्ट की एक पर्सनालिटी होता है मगर यार अगर आप होस्ट के फ़ैन हैं ना तो फिर भी आपको शो सेटिस्फाई नहीं कर सकता है कि the host doesn't get to talk about himself so much, I know what you mean, but there is like in Shahzad and Muru's case, there is quite a lot of back and forth, Yeah, I agree. It's more like. And the thing is, man, since they're so plugged in Pakistan, like they're very they're names that everyone knows, and like among like Pakistan's like talent, among their like creative community, like the artists, like if you were to talk to, for example, like many scholars or music artists or like filmographers in Pakistan, musicians, they generally tend to know each other. It's a pretty small community of people. हाँ मुझे ये समझ भी नहीं आता कि कैसे सबको जुल्फी को बताया भाई हर बंदे के गाने में जुल्फी होता है But नहीं यार सब पता नहीं कैसे पर सब एक दूसरे को जानते हैं It's like a very small community. I guess जो लोग अंग्रेजी बोलते हैं that's like the group. Yeah, oh you figured it out. सही. तो होता क्या since they're so plugged into the country and they're where they live, the guests they bring on are usually interesting people. Like they might be in different fields, but what they have in common is like they're really at like the 1% of their fields, like someone like Timur Rahman, who's like a LUMS professor, like really knows his stuff inside out. He's the man to bring on if you want to talk about like Pakistani politics or like its economic situation. Similarly, like someone like क्या नाम है यार उसका Asma Jahangir's daughter, like if you want to discuss like more like the political situation in Pakistan, like in terms of like from a human rights perspective, then that's the person you want to bring on, because she's like really seen the stuff on the field, like on the ground. So I think that's what makes him dope is like he knows all of those people in Pakistan, so he can just call them on the show and then like really have an interesting discussion with them. Yeah. And also the ability to ask like insightful questions, like they get them to talk about things that like would interest us. True. The things that you wouldn't otherwise get to hear. I agree with you. It's still like even the Joe Rogan experience is very similar. There's a lot of episodes, but there's very little Joe Rogan. I'm not a fan of Joe Rogan either, but again, I'm going back to the Ricky Gervais show because that show and Carl Pilkington is, it's just so easy to make content, कि एक गेस्ट बुलाने से यार कंटेंट इजीली बनाता है कि बंदे का पूरी ज़िंदगी है जो भी सवाल है पूछ सकता है right you can keep that format going for a long while but if you got 3 people right every time you do a show you need to come up with something new and either you've got a good writing team or you've got like a good team of hosts और जब वो होता है ना कि गेस्ट की ज़रूरत नहीं पड़ता तो यार like I feel like the podcast is more is less vulnerable rather कि content पर चलता है भाई हाँ भाई ये बात तो आपने सही की है it's more about like
you can also just explore like the जिन चीज़ों में आपकी दिलचस्पी है आप उन्हीं मौजू पे आप गुफ्तगू कर सकते हो ये भी एक चीज़ है हालांकि अगर आप when you're interviewing like experts in a field you know you have to talk about their field okay. But no man I agree with you like even Whose Line Is It Anyway was such a good show and it had the same people you know same बंदे थे यार वही नहीं ये तो है बिल्कुल वैसे यार उसकी नाम तो ड्रू कैरी था सही and he was on a few shows right the show that he was on एक होता था Star World it was on Star World exactly and he had a hot wife मगर नाम क्या था भाई क्या नाम था यार बिल्कुल ही भूल गया हूँ you know I think he is even no he's still alive but क्या नाम था यार उसका शो का मैं भूल गया यार मगर यार मैं कल तो ये देख रहा था कि there were people who were saying you know I'm starting to unironically like the King of Queens and the King of Queens is a sitcom that I remember being on TV very often back in the day but this is what I was thinking trying to think of the name of the show the first thing that came to mind was King of Queens because the dude is fat वो तो दूसरा मोटा बंदा भाई बंदा मोटे होने से ड्रू कैरी नहीं बनता तो मैं भी इस गलतफहमी में था I swear to God I had the exact same thought man कि यार King of Queens में था ना ये पर मैंने देखा that was a different chubby dude हमारे गलतफहमी भी एक ही होते हैं भाई ये क्या है कुछ अलग ही it's a next level telepathy you know हाँ यार मगर मुझे पता है कि जो ड्रू कैरी की शो था उसमें उसकी वाइफ तो था ये उस ज़माने में like you know it used to be quite common like the lead of a sitcom is a fat dude and his wife's really thin and hot and I remember like the woman I remember her as well but it's a very nice show I can't remember what it's called man it's really bothering me now I just looked it up man it was Dharma and Greg oh true that was on Star Wars right? That was on Star Wars right I think that was it right I mean that's the only one that I see here that I think it could be apparently he was also in Community and in maybe one episode. Which episode was that? I don't remember seeing him at all. Yeah, me neither, man. But then again, it's been a long time since I watched it. Yeah. But yeah, that's the one. I think it was Dharma and Greg, right? Because his wife is Dharma. Yeah. And she's like really hot, right? Yeah, she's still hot, man. Even though it's been a long time. It's been like 20 years. 20 that was in 1997 man it's been 20 no नहीं मुझे बताया ना नहीं कितने हो गए मुझे बताया कि हम तो 1994 वाले हैं तो हमसे तो तीन साल छोटे भाई कमाल bro अभी पता ही नहीं चला कहाँ वक्त गया पर yeah man and that was the one it's weird because it was like in 97 but I guess it was still they had reruns going till my like you know ये तो होता था फ्रेंड्स भी होता था साइनफेल्ड भी होता था Fraser you know Fraser dude that is a show that was not actually from our timeline you know कि Fraser Cheers those were not ours you know वो हमसे थोड़े पहले थे हाँ bro बिल्कुल लेकिन वो फिर भी आते थे Star Wars पे ना and Home Improvement you remember I hated the show though Home Improvement the dude like I remember the kid can't remember what his name was but I saw a few discussions on Reddit about him about how people our age have run into him and he was like the cool kid you know everybody wanted to be him मुझे याद ही नहीं है Oh yeah, bilkul. But for some reason, I really hated that show. You know, I did as well. I hated the guy Tim Allen. I hated him. Tim Allen. Yeah, बड़ा चुतिया था वो से. वाकई कि ये कौन सा premise है भाई show के? And Everybody Loves Raymond was even worse, man. Dude, I swear to God, I hated Everybody Loves Raymond so much because
रे रोमानो की जो कॉमिक सेंस है ये तो मैं मानता हूँ, बट द सेटिंग ऑफ द शो was just way too weird. Like I loved Everybody Hates Chris, but I hated Everybody Loves Raymond. Same exact, man. Like, Yeah. bro, I loved Everybody Hates Chris. It was just such an entertaining show. But Yeah. Raymond, yeah, it used to be on QTV as well. And No I don't way. know why, man. From the start, I was like, what is this, man? It's just, you know, like, what's the point of this show? You know, it's just so, the one-liners were all so predictable and cheesy. And the whole show was just a cliche. It was poorly written, wasn't it? मगर Everybody Hates Chris is honestly a show like आजकल अगर आप देखने चाहते तो it's very hard to find कि मगर मुझे याद है कि I used to watch all of it और काफ़ी oppressive childhood था क्रिस रॉक के, so it wasn't too much fun to watch, but like, you know, it's nice, like his dad's Terry Crews and everything, but like I liked his Italian friend the most, you know, वो यार मुझे सबसे अजीब बात लगे. And Yeah, man, I think and Bed-Stuy. I think that interests us for sure, you know, like even in Everybody, no, what was that? A Kid Called Danger? Yeah, yeah. They don't ever tell us what his, I don't think they tell us if he's Italian, but Yeah. I'm pretty sure that kid was Italian, you know, the one who's like... all black, yeah. Slicked hair. Yeah, Yeah. black hair and like, he's able to like break any lock, you know? And I don't know if I read too much into this, but I always felt like it was implied that he was that the villain's son. You know? ये सिर्फ यार बात ये है कि उस फिल्म का इतना फैंस नहीं है कि फैन थियरी हो सकता है, मगर ये वो है. Holy shit, dude, that's fucking hilarious. Gidney nahi baat sahi hai. It's like there's no one else we can consult and get their input on. यार एक मैं हूँ एक आप है, तो आपने कहा मैं तो मानता हूँ, तो यार हुक्म होता है, सही है. लेकिन आपको भी ये ख्याल आया था ना? हाँ, मुझे लगा था. I thought it was implied, yeah. Yeah, because it was never even addressed in the movie, but I don't think यार उस फिल्म के राइटर्स इतने क्रिएटिव होते हैं. यार मेरे भी यही मसला है. I don't think वो इतने कामयाब थे कि हमारे सोच तक उसने पहुंच गए. मुझे सिर्फ कोइंसिडेंस लगता है भाई. मानता नहीं कि उसने इतना भी सोचा होगा. वही यार, मुझे लगता नहीं कि वो इतने सोचने के काबिल भी थे, क्योंकि जो फिल्म उन्होंने बनाई थी, it didn't seem like it was, they gave it a lot of thought, you know? ये सब ईस्टर एग्स डालने से पहले यार पहले तो काम खत्म करने पड़ते. ये तो काम ही नहीं खत्म की कि ईस्टर एग्स की बात कर रहे हैं हम. क्या पता ये खाली ईस्टर एग्स ही डाल दिए उन्होंने, शायद हाँ, just to like mess with people. उसने सारे बोनस क्रेडिट्स कर ली और कोर्स तो फेल कर ली भाई. बहुत से अंडे छोड़ के अमर खाओ के यार वाकई सिर्फ. But it just seemed like such a resemblance, you know, because the same exact hoodie, you know, the hair slicked back and the leather jacket, you know, and like the Italian features, and you know, both of them are like crooks as well. Yeah. I always felt like it was implied, but kya kamal. I know this comes up often, but I still think it's crazy that we both have watched the film, and for the same reason, क्योंकि उसका you know, with जिगर के साथ उसे एक हमारा कैसेट टेप मिल गया था, मुफ्त में मिलता था. तो यार एक और बात जो आपने पहले की कहा था ना कि हमेशा केबल टीवी नहीं था, तो हमारा भी नहीं था यार. तो हम भी ये VHS काफ़ी मतलब एक ही VHS देखते जाते थे. तो मुझे भी कुछ फिल्में ऐसे याद है कि शायद मैंने 1000 बार देखे होंगे. कसम यार, ये it's very unique to our childhood, but ऐसी फिल्में हैं, कई shows हैं जो ना और कई episode के या कई movie के हर line हमें ना मालूम होगी. Even before exact seconds, you know, we could tell what line they're going to say and like what happens, you know. हाँ. ये यार अगर आप गौर से मतलब सोच लो कि ADHD की वार्निंग साइंस है पहले वाले.
Bilkul, yeah, obsessive, obsessions and shit, it's like, you get like, you go down these like, have these like obsessive interests, like narrow interests, and then एक ही चीज आप दोबारा करते रहते हो. OCD as well, I think is similar. Like one of the symptoms is this. You can like compulsively do something over and over. तो ये तो मैं अक्सर सोचता हूँ यार इसके बारे में. I know it was like quite unique to our childhoods. But honestly, man, when it comes to something like language, right? I can only speak for to languages. I'm sure this is true in other fields as well. But like repetition is really the key to mastering or like acquiring any language. I agree. So, even if you're capable of doing something repetitively, like over and over and over, it is like, that's really what you need in order to acquire a language. And if you're learning a new language, man, the key is like repetition and like regularity. So, man, if you're someone who can watch a video like 20 times, or watch a movie like 200 times, like you'll like start to acquire the language in the movie like very quickly. नहीं यार, मैं मानता हूँ. और यार स्पोर्ट्स के बारे में भी अगर आपको याद है कि मेरे घर में ना वो हैंगिंग तो क्रिकेट बॉल था, और सिर्फ स्ट्रेट ड्राइव और डिफेंस प्रैक्टिस करते हुए रहते थे कि the same shot 1,000 times over, you keep practicing it so it becomes like second nature. और यार वो repetition से यार बंदे के वाकई में बेहतर होता है कि it's normal, हर बंदे ने की है. You're right on that. Yeah, that's a perfect analogy, man. Yeah, it definitely applies to sports too. Like, if you've, like a straight drive or like a sweep, if you played that same shot like hazaron baad, second nature is exactly what it is, like it's just, like you do it without even realizing what you're doing, it just becomes intuitive. And, I think we've really come full circle because you start with intuition, about economics not being intuitive beyond a point. Language पर आ गई और ये तो intuitive लगे. सही. Yeah. I mean, when something just becomes part of your intuition, you do it without even thinking about it, And video games are a perfect example where, like, I've played FIFA and COD, and like I know what the controls are, but if you ask me, I wouldn't be able to tell you, Oh, yeah, okay, say. You just know how to do it. Because your fingers, you just know how to do it. Your fingers just go like in the right places because it's called video game intuition, Yeah, your fingers just go in the right places, eh? वो भी एक intuition ही है, it's like वो भी कोई सिखाते नहीं. सिखाते नहीं कोई. हाँ ब्रो, वो तो बिल्कुल तजुर्बे से आता है, हाँ, मुझे वो तजुर्बा नहीं है भाई. हम तो शरीफ इंसान हो. आप भी होंगे शायद. हम सिर्फ हाइपोथेटिकली बात कर रहे हैं. मगर यार वैसे कल तो PSL की शुरुआत है और मैं सोच रहा था मैं कौन सी टीम को मतलब सपोर्ट करने की. यार KPK के अब बंदे नहीं है तो मैं लाहौर की टीम सपोर्ट करने की मतलब लाजमी हो गई यार कि क्यों KPK की टीम नहीं है. मगर फजूल की बात है, सिर्फ याद कर रहा था. नहीं, बात सही है यार. हाँ, पर PSL तो यार it is like quite big now, and ठीक पर ये भी देखें यार, ठीक इलेक्शन के बाद ही उन्होंने रखा है यार. वाकई ये मैंने r/पाकिस्तान में भी पढ़ा था कि ये सब प्लान्ड है. हाँ, तो मुझे ये लगा कि यार अगर आप जैसे बेवकूफ़ों को ये समझ आते कि ये प्लान था, तो ये प्लान कौन से बेवकूफ़ बना रहे हैं कि थोड़ी बेहतर बन सकते थे. नहीं सही में यार, मतलब पर ये किस्म में यार, I mean it's like जो इस बार बॉयज ने गेम खेली है, इलेक्शन में everyone came out and voted for PTI, man. Like it's just
तो वो भी कह रहे थे यार कि मतलब जो और खुलेआम जो वोट चोरी किए हैं हम लोगों ने मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता यार, कसम यार सब डेमोक्रेसी इतना की बड़ा माँ नाटक बहन हो रहा है। हाँ ब्रो इतना बड़ा नाटक है यार कसम you know it feels like how is this just you know ये like मरियम नवाज और बिलावल election भुट्टो वाला ड्रामे चल रहा है भाई। और हाँ भाई जीओटी जिंदगी गुजार है हाँ जिंदगी नाइस 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 नाइस, सही वाकई में यार कि इसमें सब है भाई, जो नवाज शरीफ के रोल के लिए भी बंदा तो सही है यार कि वो भी काफ़ी मियाँ मियाँ काफ़ी अच्छे ड्रामे करता है भाई। हाँ ब्रो नवाज साहब तो यार ही इज अ कैरेक्टर you know हाँ यार कि मुझे पर यार मुझे पंजाबी बंदों से उसकी अलावा तो मुझे अच्छा लगता है। हाँ ब्रो वो तो कैरेक्टर है यार I mean he's like but जुनैद अकरम से मुझे याद आया था bro I mean I know you mentioned that people get upset with him a lot you know हाँ और ये चीज मैंने देखी है खुद भी कि one thing you might have noticed he never says Assalamu alaikum at the start of his show हाँ ये यार जुमा मुबारक नहीं कहते, कुछ नहीं कहते। और मैं यार जो उसने कहा ना, मगर आप बताओ, मगर मैं भी ये मानता हूँ। हाँ bro क्योंकि he was like you know he just starts with क्या हाल है भैया you know that's his opening line right हाँ भाई क्या हाल है भैया you know and once someone asked him no one asked him but he said himself you know why he doesn't start with Assalamu alaikum because he was like एक दो दफा you know in the beginning he would start with it और बहुत से लोग उस पर कमेंट करने लगे थे कि यार आपका अस्सलाम वालेकुम बोलने का अंदाज सही नहीं है you know you're not saying it because many of them they shorten it Pakistanis they say like अस्सलाम वालेकुम you know you won't hear the assalam you know and so he was like हाँ लोग काफी यार नाराज थे इसको लेके तुम मेरे पीछे पड़ गए थे you know he's like तब से मैंने बोलना ही बंद कर दिया मैंने कहा यार it's better that I just start you know with like a neutral opening but हाँ bro there is a lot of like moral policing in Pakistan unfortunately you know when it comes to this stuff मगर एक और वजह है कि यार जो उसने ये भी कहा कि वो हमेशा ये जुमा मुबारक या ऐसे बात भी जो मुस्लिम कल्चर के हिसाब से होता है वो भी नहीं कहता है। तो उसने कहा इसलिए नहीं कहता है कि अक्सर लोग वो एक शील्ड बनाते हैं, सही, कि ये सब कहने से यू कांट बी अटैक्ड पर्सनली। कि टू गिव यू एन एग्जांपल ऑफ दिस, मैं इस बात से काफ़ी नाराज़ था कि when I call somebody who works for me, शायद उन्हें पता है कि मैं नाराज़ होने वाले हूँ, सही, कि मेरे कॉल यूँ नहीं आता है कि मैं अगर कॉल कर रहा तो तेरी माँ बहन करने के लिए कॉल कर रहा, सही। So when they attend the call, they always start with Salam Alaikum and I have to return his salam, सही। तो मेरे नाराज़गी आदि तो वहाँ चली गई। तो ये एक शील्ड है यार कि लोग इस्तेमाल करते हैं कि इंशाल्लाह कहते हैं या ऐसे कुछ कहते हैं। That's just people using religion to kind of have an easier way out of life, you know। कि उसने ये भी कहा कि इसलिए मैं इस्तेमाल नहीं करता कि I don't want to do it, कि मुझे ये आपके एहसान नहीं चाहिए। और एक और बात उसने कहा कि जो हाथ ना आपके लिए आपके मदद करने के लिए उठा या वो हाथ उससे बेहतर है जो दुआ करने के लिए क्या कहते हैं, जो दुआ करने के लिए निकला हो। हाँ, तो उसने ये भी कहा था कि ये तो बात सही है यार कि हर बंदा कहता है कि मैं आपके लिए दुआ करता हूँ, क्यों दुआ कर रहे हो भाई, तो छोटी बात है आप ही कर लो मेरे लिए। ऐसे बंदे भी काफ़ी नहीं होते। मैं यार जुनैद अकरम से काफ़ी बात मैं एग्री नहीं करता कि मुकम्मल मैं उसके साथ नहीं हूँ। मुझे लगता है कि बंदे के कोई अच्छे पॉइंट्स हैं मगर मुकम्मल नहीं, कि ही इज़ एंटरटेनिंग, ये तो मैं मानता हूँ, मगर ही इज़ नॉट ऑलवेज राइट।
मगर इन चीज़ों से तो मैं मानता हूँ। और एक और बात है यार कि जुनैद अकरम पाकिस्तानी नहीं लगता है मुझे, हाँ इंडियन बंदा ही लगता है। क्या यार पंजाबीज में there are many features, you know, like whether it's Indian, Punjabi या पाकिस्तानी, you'll see like a wide range of features. आपको वहाँ ऐसे पंजाबी दिखेंगे जो बिल्कुल they're like very light skinned and they like look almost European. और आपको ऐसे भी पंजाबी मिलेंगे जो were like very dark, you know, and everything in between as well. तो मेरा ख्याल है वो कहीं दरमियानी में है, you know, दोनों एक्सट्रीम्स के दरमियान है। सही है। मगर यार इंडियन लड़के मैंने काफ़ी ऐसे देखे हैं जैसे जुनैद अकरम, काफ़ी देखे हैं। हाँ यार, I think he's starting to look more like an uncle now, you know. ये भी सही है। और जिस तरह से वो गाली देता है ना, मुझे लगता है कि ऐसे बंदे तो मैंने काफ़ी दिल्ली से ही देखा है। काफ़ी यार। But then again, man, like Punjab में यार, East and West Punjab, they're more similar than they, you know, I think would like to admit. क्योंकि उतनी इतनी पुरानी तारीख है कि you even see it in like their surnames, you know, कि so many of the surnames वो common है उनके, you know, चाहे इंडियन पंजाब में हो, पाकिस्तान पंजाब में हो, जैसे आपको चीमा, चौधरी, मलिक, ये तमाम जो नाम है, बाजवा भी सही है। बल्कि बाजवा भी है जो उनके भी मिलिट्री चीफ है। यार बाजवा सही बाजवा काफी है। ये एक तो है सोनम बाजवा, दूसरा उनकी बाजवा। एग्जैक्टली यार। और बाजवा ब्रो सारे पंजाबीज में नाम होता है, you know, whether it's Indian, Muslim, like Hindu, Muslim or Sikh, you know, या इंडियन और पाकिस्तानी पंजाबी हों, तो ये वाले सरनेम्स तो you see even लोग तो basically same ही हैं, you know what I mean? एक ही बात है। जी। और ज़्यादातर जो ये stories बनाई उन्होंने, like many of them do claim foreign origin, जैसे काफी सैयद्स वहाँ भी हैं जो कहते हैं हाँ नहीं यार हमारे actually हम इस खित्ते से नहीं हैं। So none of that has actually been proven, you know, and most of it is like, अगर हम DNA evidence देखें तो it is disproved by DNA evidence. और काफी आजकल काफी आसान है ancestry चेक करना। Exactly यार, मतलब 2 मिनट में कोई आपकी पोल खोल सकता है, you know. तो ये तो है bro, I mean काफी लोग हैं वो exact same दिखते हैं, you know, I've seen many आप शक्ल से आप कह भी नहीं सकते whether it's they're Indian or Pakistani, you know. ये सही है। और यार वैसे वो पॉडकास्ट में जिसमें अहमद अली भट्ट और जुनैद अकरम था, वो पंजाबी की बात कहता है कि ज़ुबानी क्या, तो मतलब ये जो जुनैद अकरम तो रहता है कराची में, मतलब वहाँ था जब छोटा था, तो उसने तो सिंधी सीखी है मगर पंजाबी नहीं। तो और अहमद अली भट्ट वैसे भी पंजाबी है, तो वो बात कर रहे हैं आपस में कि पंजाबी हम क्यों पढ़ाते नहीं है या हम उसकी इज़्ज़त नहीं क्यों करते हैं। तो बिल्कुल। दोनों की कॉन्वर्सेशन शुरू हुई और उसने कहा यार ये ज़ुबानी ना हमारे मुलाजिम, हमारे ड्राइवर ये कहते हैं, तो इसलिए हम इसमें इसकी कोई इज़्ज़त नहीं करते। मगर जो बलोच है, जो KPK का है, उनकी कल्चर वो कहाँ भी हो दुनिया में वो उसी ज़ुबानी में बात करेंगे। मगर जो पंजाबी है वो नहीं भाई, वो जब तक पाकिस्तान में है वो पिंड में नहीं बात करेंगे, पिंडी में नहीं बात करेंगे, जब बाहर जाते तो करते हैं। और उसने ये भी कहा कि पंजाबी की जो भी तरक्की की है ना, वो सब इंडियन पंजाबी ने की है। कि AP गुरिंदर इनकी बात कर रहा था कि सब इंडियन पंजाबी ने पंजाब और ज़ुबानी की इतनी तरक्की की है, और जो पाकिस्तानी पंजाबी है वो मानते ही नहीं कि पंजाबी हमारी ज़ुबानी है। और हमारे भी ये बात हुए थे, मुझे याद हुआ था।
नहीं यार बिल्कुल सही बात की है. And it's like it's only until recently कि इस पे लोग तनकीद भी लोग कर रहे हैं. क्योंकि पहले तो इस पे बात भी नहीं होती थी. मतलब आप पुराने भी जो even people that I have a lot of respect for, जैसे अगर आप इकबाल साहब देखें, आलामा इकबाल देख लें या फैज अली फैज देख लें, they were both Punjabi, you know, but they never wrote any, मतलब पंजाबी में ना उन्होंने कोई नज़में लिखी हैं, ना कोई उन्होंने मुशायरे लिखे हैं. कोई, you know, they, if you read their work, you would think कि उनका यूपी या लखनऊ से ताल्लुक था या अलीगढ़ से ताल्लुक था. ये तमाम जो शहर है ना जहाँ से उर्दू का मतलब वाकई में ताल्लुक है, पर अपनी ज़बानी में उन्होंने कुछ भी नहीं लिखा है, you know, क्योंकि बात सही की आपने. They do look down on Punjabi. उनको लगता है it's a language of, you know, driver लोग और किसान लोग खासकर, और जो just like जो पढ़े लिखे लोग नहीं है वो अक्सर पंजाबी बोलते हैं वहाँ, you know. तो एक वो it's associated with like people of lower status, you know. और यार मैं ये मानता नहीं था कि पता भी नहीं था मुझे कि पाकिस्तान में लिटरेसी रेट 37% है, कि यार काफ़ी कम है. कम तो है यार, और शायद सबसे ज़्यादा पंजाब में होगा. मेरा ख्याल है. है. क्योंकि बाकी इलाकों में तो कुछ भी नहीं है ब्रो. आप अगर KPK के इंटीरियर में जाओ, वजीरिस्तान में जाओ, तो खासकर women's literacy तो bro in some areas it's like 9 or 10%, you know. मगर आपको पता है कि पाकिस्तान में सबसे बड़ा हाईएस्ट लिटरेसी रेट कहाँ होता है? एबटाबाद. वाकई. बिल्कुल. कमाल यार, ये मैंने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था वाकई में, क्योंकि पर आई गेस प्रोविंस की तरह अगर देखें तो पंजाब में ज्यादा होगा एज अ प्रोविंस. पर सिटी के हिसाब से तो मैं समझ सकता हूँ यार, क्योंकि नाम में ही एबर्ट है ना. नाइस. और यार बल्कि फैसला यार होता नहीं मैं कह रहा था, बल्कि फैसलाबाद भी जो शहर है ना, it was originally called लियालपुर, you know. ये मुझे पता नहीं था. क्योंकि वो भी एक एबर्ट was like General Abbott, वैसे एक General लियाल भी था. British, you know, British journal, like in the colonial times. तो लियाल पे उन्होंने लियालपुर रखा था. पर बाद में जब जिया के दौर में जब पाकिस्तान के ताल्लुकात सऊदी से ज़्यादा गहरे होने लगे, तो किंग फैसल के नाम पे उन्होंने फिर फैसलाबाद रखा है. Dude, King Faisal being assassinated is one of the weirdest stories you hear in, you know. That would happen? Fuck, bro, I did not know that. Yeah, it's pretty weird because King Faisal, like the founder of Saudi Arabia is King Abdulaziz, yeah. So he had a bunch of sons, and his son is still the king, you know. One of his sons is still the king. So King Abdulaziz had two elder sons, Saud and Faisal. Now Saud is the eldest, so when King Abdulaziz died, Saud came to the throne. But bande kafi ayashi karne aaye the. He was just spending money, and there was a lot of oil revenue which he wasn't really reinvesting in the economy. तो काफी लोग नाराज थे. And हमारे जो दोस्त थे CIA वाले, वो तो आ गई, और they had like a small like there was a little bit of conflict within the two brothers. And like, by the way, like when King Abdulaziz passed, he asked his sons, you know, not to kill each other. So which they did agree to, so they didn't do that. But the royal family and the CIA wo kafi naraz tha, so they had a prime ministership set up, so Faisal had power, and Saud was like, you know, just the king for namesake. But then Saud tried to take power back, and then Faisal didn't like it, so then Saud was sent to exile, and Faisal became king, while his brother was still alive, you know. So Faisal to king ban gaye, and he established the constitution. He was one of the best kings of Saudi Arabia. He was very modern, he was very well spoken, very well educated. But he brought television into Saudi Arabia, and it was a conservative society, so Saudi Arabia didn't really like it.
So the people started protesting, and in the protest, his nephew was there as well, who's a member of the royal family, you know. He was there and he was shot by the police, right? No. Yeah, so his son came to a majlis, which is the king's royal majlis, to greet, I think, his uncle, right? So he came to greet his uncle, hugged him, and then pulled out a revolver, shot him in the head. And that's how King Faisal died. He was assassinated by his own nephew. And then King Khalid came to power, and then King Fahd, and then King Abdullah, and King Salman, who's the current king. They're all sons of King Abdulaziz, who founded Saudi Arabia in the 1930s. So यार 100 साल हो गए फिर भी उसकी बच्चे की हुक्म चल रही. हाँ ब्रो, बहुत ये तो काफी इंटेंस तारीख है यार. I didn't know about it. यार मुझे ये सब like, you know, like within, I know a lot of Saudi Arabian history, but like within the sons of King Abdulaziz, there's a group of people which is like a clan called the Sudairi Seven, right? They're the most powerful group. और उसकी King Fahd, King Sultan, Naif, Salman, and there's 3 more who have not had big positions, but ये सब ना, they're the biggest faction and they're incredibly powerful. Like Sultan is somebody that I personally like a lot because he was like known as the king of good times. बंदा तो यार सबको सब देते थे. और फहद तो आपको अहम है कि like आजिज है बंदा. Salman to abhi, he's the current king, and Naif was like the Minister of Interior for a long time. He was in charge of counter-terrorism in Saudi Arabia. He's a big friend of the United States, but they passed away, most of them. But like I've spent a lot of time on Saudi Arabian history. If you want to go into it, we'll probably do it on the next season. But like यार मैंने इतना कुछ पढ़ा है, and I remember in 2015 we had a conversation on Najd and Hijaz and the tribes of Saudi Arabia. It's pretty interesting. It is, man. Like, I mean, I know a little bit about like them geopolitically, like where they're situated. A little bit about their internal politics. But के बारे में मुझे इतना कुछ नहीं मालूम था कि, you know, they had such a contentious history and so much internal conflict, you know. इतना का मुझे कोई आइडिया नहीं था क्योंकि इतना इसमें मैंने पढ़ा नहीं है. पर मुझे याद है कि अभी उनका जो ईस्टर्न हिस्सा है ना, you know, like Qatif, Dammam, Doha, Khobar, there, ये इलाका, it's like majority Shia. Which was quite shocking for me because I didn't even know there were Shias in Saudi, you know. But हुकूमत में क्योंकि हुक्मरान में leadership में they're very like almost zero Shias. But वो पूरा जो इलाका है जहाँ where Aramco is based as well, where like the oil are, वो पूरा इलाका ही Shia है. और Arab Spring के दौरान ना वहाँ there were protests in eastern Saudi. And it's like, it's next to Bahrain, right? Which makes sense because Bahrain is already Shia too. But there were like, there was an uprising, and not only in Bahrain का तो लोगों को मालूम भी है कि Arab Spring में वहाँ भी uprising हुई थी, you know, against the family. But जो Saudi में भी, बल्कि जो eastern हिस्सा है वहाँ भी uprising हुई थी. हुआ था यार. और जो मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर का जो आर्म्ड व्हीकल्स है सब लगा दी भाई कि there's a cleric named Nimr and there's a few other people, ये सबको यार उठा दी. और I think Naif was the Minister of Interior at that point in time. मगर ये सिर्फ तारीख की बात है. It's not like a political opinion on this. I'm just telling, you know, I'm just calling it as it is. But यार एक तो बात यह है कि जो रूलिंग फैमिली है वो रियाद से है, कि रियाद, तेहरान, central Saudi Arabia, right? And like you said, you have the eastern flank and you've got the western flank. वो भी अलग है कि मक्का मदीना उसकी अपने ही तारीख है, अपने ही लोग थे. तो like Riyadh isn't really a population center, you know what I mean? Like these guys are from the interior of Saudi Arabia,
but like the western side especially has a very Ottoman history, you know, because for a long time, before King Abdulaziz, Mecca and Medina, they were pretty much like a protectorate of the Ottoman Empire. And if you had to go on Hajj, then it was conducted by the Ottomans. तो सबकी यार एक तो इन सबको यूनिफाई करने में भी काफ़ी मसला पड़ा था कि the unification of Saudi Arabia, this was the third time that they tried when King Abdulaziz was actually successful, कि उसकी पहले 2 बार ट्राई की थी और हुआ ही नहीं. And it's honestly a very it's a big task, to be honest, and the fact that they did actually do it, to be honest, the history of like most Middle Eastern countries is very, very interesting, but it's not properly documented, you know, like even the issues between Kuwait and Saudi Arabia, between Kuwait and Iraq, like the entire Gulf War happened because of one meeting, and the Kuwaitis, you know, just showing up in a bad mood and not being nice to Saddam, right? It's that dumb. Like, आप ही सोच लो कि think of all the things that happened, all the lives lost, just because, you know, Saddam and the Kuwaitis couldn't agree. But काफ़ी interesting तारीख है यार Middle East का. बहुत interesting है वैसे. और you know, जितनी यहाँ जंगें लड़ी गई हैं, and the way that it was divided by Lawrence of Arabia mostly, you know. Yeah, agreed. Yeah, पूरा division किया था, and the lasting effects that it's had to this day, you know, जिसके आज भी उसके जो नतायज हैं उन आते हैं जब हम हालात देखें. But I mean, it was definitely a project that unifying all of these different tribes, because it is a tribal region, you know. And कितनी जो पुरानी यार बनी उमैया जैसे हैं, and you know, there's so many different tribes that were like united to really create the state. And it's definitely more, I can imagine there was like friction in doing that, you know, because it is like a much bigger country as well, and compared to a lot of like the smaller Gulf countries where, you know, it was easy to like get everyone together, you know, like different tribes together. ये आसान नहीं था, मगर यार जो Lawrence of Arabia, the film, right? It's one of the most visually striking movies I've seen. Like remastered version bhi hai, and it's so beautiful. Like it's 3 hours, and if you remember the opening sequence, it's just a camel walking through a desert, you know, and it's there for like a minute or two, and it's far off in the desert. It's not a zoomed in shots or anything, and it's beautiful, man. Cinematic masterpiece. Yeah, man, I remember the scene you're talking about, man. It's honestly, and yeah, dude, to think that it's like this is based on like a real guy, you know, like someone who, if there's one person we can think of who's single-handedly shaped like Middle Eastern politics, it would be him, you know. Like no one person has had a bigger impact on the region than this one guy and the decisions he made. एक ज़माने में यार गोरे भी काफ़ी कामयाब थे. Oh, bro, same man, man. But अभी भी देखो तो यार, like most of these countries used to be British protectorates. Yeah. Like, you know, it was kind of like an oil for protection type of deal, you know, where they would get protection instead of like, you know, instead of like favorable contracts on oil. Yeah. In exchange for favorable contracts on oil. But now that's kind of just, it's officially not, but I think the countries are kind of like U.S. protectorates, you know, where even like Saudi, I think, where what they have in place effectively is like a U.S. protectorate where, you know, the U.S. has its military base there, I'm pretty sure, you know, and
it's like if anything were to happen in the region, like that's who they're counting on to, you know, really come to action. मानता हूँ, सही है. और यार एक और इंटरेस्टिंग बात है कि मतलब याद नहीं आ रहा भाई, आपने क्या कहा था कि याद नहीं आ रहा, मगर जो लॉरेंस ऑफ अरेबिया और उसकी जो हुकूमत की तारीख है यार, इतने इंटरेस्टिंग है. हाँ, तो यार 2-3 दिन पहले हम तो मतलब मैं तो काम करता हूँ कॉन्ट्रैक्टिंग में, और हमारे वैसे काफ़ी जब भी वक्त मिलता है ना, हम फजूल की बातें काफ़ी करते हैं कि upper management is always finding ways to waste time, you know. तो हम सऊदी बिन लादेन की बात कर रहे थे कि you know they were the biggest contractor in the Middle East, and they shut down very suddenly, you know. Ki I think at some point of time they had about 20, not 20, they had 40,000 staff, right? 40,000. So when the company shut down, what happened was all the laborers and everybody वो सब भूखे रह गए, और the government of India used to charter planes and send food to Saudi Arabia for their citizens to eat. ये हालत था कि no way. हाँ, हर बंदा तो इंडियन था. और यार सऊदी बिन लादेन के पास, और ये वही है कि जो ओसामा है उसकी भाई, उसकी अब्बू की फर्म है, तो they won all the major contracts. They did everything pretty much. All the palaces were built by Saudi bin Laden. Saudi Ogier has the kind of same history but on a smaller scale. मगर जो 2016 में एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था जो हरम शरीफ में था, और उसकी बाद like the royal family cracked down on Saudi bin Laden. But if you can imagine like a company that is worth I think it was worth 190 billion, right? In 2016 up until 2020 they were worth 0. They were shut down. तो हम सिर्फ ये बात कर रहा था कि यार कभी भी ना किस्मत बदल सकता है, तो हम ऐसे सोच रहे कि हमारे अच्छे वक्त तो आ जाएंगे. हम मतलब मिसाल तो दे दी जो मुकम्मल खिलाफ है. But Saudi is something that we should probably get into on an episode, and the Middle East sounds interesting because हमारी भी तारीख है यहाँ. तो यार ये तो 1 घंटे के जो मार्क तक आ गई. आपको क्या लगता है इनकी थीम, ये जो मथीरा से शुरू हो गई और सऊदी रॉयल फैमिली पर आ गई? नहीं यार, I think it's quite fitting because सऊदी में पिछले कुछ सालों में जो तब्दीली आई है उसमें you can imagine like Mathira, you know, walking freely in Saudi. यार ये सिर्फ आप कह सकते हो भाई, मेरे जहन में नहीं आते ये सोच. क्योंकि कुछ साल पहले तो मुमकिन नहीं था. अगर आप इलाका देखे ना कि अबाया भी जैसे था वहाँ, it was like mandatory just like in Iran, you know, you something you have to wear. और एक उनका मुतव्वा पुलिस भी होती थी जिनको कहते ही मुतव्वा थे. और मैंने कहा they weren't even hiding like what they're doing, you know. मतलब वो पुलिस भी उन्होंने मुतव्वा रखा था. And they would like basically just go around checking that like women were not showing any skin, you know. And और होता था तो डंडे वंडे भी मारते थे, you know. तो इस तरह का काफी सीन था वहाँ. और अभी तो वो सब हटा दिया है bro. I mean आप जैसे बता रहे थे ना, you know, it was quite conservative, like watching like a film for example, you know, listening to music. अभी तो मेरा ख्याल है मूवी थिएटर्स भी खुल गए हैं वहाँ. And abaya भी required नहीं है, but they've even ended male guardianship, you know. They did, but we've got about
25 seconds. What do you reckon's the title for this? We can say Mathira to Madina, if you will. Oh, dude, Mathira to Madina? Dude, we're done. Yeah. We're done. Ladies and gentlemen, that's the perfect title. This has been season 2 of the Karshan Fresh Show. Episode 10, Mathira to Madina. We'll see you in the next season.